नमस्ते, मेरा नाम है सुरेन अलम्बान और CII यानी कल्चरली इंस्पायर्ड इंडियंस की आज की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस भी हैं। पहला है गॉड इज लव और दूसरा है होली ट्रिनिटी। आई हैव नो इश्यूज if you believe in Holy Trinity, you want to further understand it, or your beliefs says that God is love. But I have a deeper problem when you try to understand Hindu Dharma, Sanatan Dharma with these lenses. Or you say that in Sanatan Dharma, God is love. That means you have inherited these concepts into our own Dharma. Why? Because both the concepts are from Bible. God is love and Holy Trinity. God is not love in Hindu Dharma, Sanatan Dharma. For God, we use the word Bhagwan. भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अगन, ना से नीर, पंच तत्व। होली ट्रिनिटी हमारी युवा पीढ़ी उसे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखती है, लेकिन होली ट्रिनिटी है द फादर, द सन, द होली स्पिरिट। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जब हम गॉड को देखते हैं, वो है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, द लाइफ साइकिल। Now let's understand why there is a problem and what is the key difference. First problem is that when we try to understand our concepts with a Western culture or with the lenses of other faiths and religions, we lose our own knowledge. We do not understand our own knowledge. Second, we accept the other faiths and their concepts as our own. Respecting them is no problem, but we must also respect our own. We must also know our own system. हमारे पास अपनी भाषा है, अपना साहित्य है, अपनी परंपरा है और इन्हीं के माध्यम से हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए. Because we are not the people of the book, we are not the faith of the book, we are not the religion of the book. Even religion is not dharma, and other misconception such as all religions are the same, all religions lead you to the God are absolutely wrong. We should not accept them as part of Hindu Dharma, Sanatan Dharma. हम सहिष्णु हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी सभ्यता की, अपने संस्कारों की और अपनी ज्ञान को ना समझें और उसकी मर्यादा ना रखें. We respect others, no issues, but we must also understand and know our own value system, our own scriptures through our own lenses and our language. सनातन धर्म हिंदू धर्म में जानने की चेष्टा है. पहले जानो फिर मानो. Avatar is not Messiah. God is not Brahma. God is not love. In other faiths, other belief systems, you just follow a person and you believe. In our system, we inquire. हमारा अपना विस्तृत और बहुत गहन, deep as well as vast knowledge system exists in our own धर्म. हमारे पास उपनिषद हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, भगवद गीता है जिसे प्रस्थानत्रयी कहते हैं. अगर केवल इन तीनों का भी अध्ययन हम करें तो भी हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारा अलग साहित्य भी है जिसे हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं जीवन के हर एक विषय को समझने के लिए. यहाँ पर बात हो रही है ईश्वरीय सत्ता की, भगवान की. अब जब मैंने बात की कि भा से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अगन, न से नीर, ये भगवान को जानने का एक तरीका है. उपनिषदों में ज्ञान कांड, ज्ञान खंड के माध्यम से मैं इसे हम पंच तत्व कहते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने तत्व ज्ञान पर बहुत बल दिया है, बहुत शोध किया है. They have researched, practiced and passed on
for thousands of years. और 90 से ज्यादा तत्व हैं. There are more than 90 elements as we say. उनमें से ये 5 तत्व प्रमुख हैं जो कार्य कारण के सिद्धांत का मूल है. So just these 5 elements are for the understanding of the world around us. But these are not the only 5 elements. And that is the beauty of Hindu Dharma, Sanatan Dharma. So God is not love. Holy Trinity is not Brahma, Vishnu, Mahesh. ने कहा God is love. That means it's an emotion, it's a feeling. It may also be an ideal way to behave around you, with you. जब हम सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान को जानने की कोशिश करते हैं तो हम 3 स्तंभों या 3 माध्यमों के द्वारा उसे जानने की कोशिश करते हैं. पहला आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक. टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वी नीड टू नो आवरसेल्व्स. अध्यात्म अपनी आत्मा का, अपना स्वयं का अध्ययन, द जर्नी टुवर्ड्स यू which is your own individual dharma, individual spirituality. आदि भौतिक, the materialistic world around you, और आदि दैविक, बाकी सारी दैवीय शक्तियां. अब भौतिक, that means the materialistic world around you, is very important, without which we can't survive. Our own spirituality, while living in this material world, our own inner journey, inner growth is equally important. And then to also understand the Devik Shakti, to know that we don't know it all, and to keep that quest alive is also very important. And to find the balance between these three, Adi Devik, Adhyatmik and Bhautik, is the way of life. And to do that, every individual circumstances are different. Their interests are different. They're individuals with their own positives, negatives, characteristics. So how can one suit fit everybody? And that's the reason we have so many different panth, different marg, different darshan. And these are the mammoth concepts of Sanatan Dharma. Jain darshan, Bauddha darshan, ध्यान, योग, साधना, समाधि, भक्ति, ये हमारे माध्यम हैं जानने के अपने आप को और जिस विस्तृत चेतना का हम भाग हैं, जिस परमात्मा का हम अंश हैं, जो आत्मा हम हैं, उसे जानने का. जब आप कहते हैं Holy Trinity, you're saying there's a Father, there's a Son, Jesus Christ, and there's a Holy Spirit. Father is not the Son, Son is not the Father, and the Father is not the Holy Spirit, and the Son is not the Holy Spirit. God is the Holy Spirit, and to reach to that, you must go through the Son, the Father. That means you only have one way. Then after you complete this life, there is a day of judgment, karma ka siddhant. So you don't have any flexibility, you don't have any reason to further think, further question, further understand. And you're going in one direction only, the direction to know the God, through the spiritual path. Why can't we go through the path of the nature? Why can't we go through the path of the knowledge system? Why can't we go through the path of bhakti, devotion? When we said Bhagwan, भूमि, गगन, वायु, अगन, नीर, तो हमने पंच तत्व के माध्यम से उस भगवान को, उस ईश्वर को प्रकृति के माध्यम से जानने का प्रयास किया. And that is one way out of many ways that we have available to us. हमने यहाँ पे भक्ति की बात नहीं की. We didn't have to believe, we didn't have to show devotion, we wanted to know. Know what? When we say Brahma, that is different from Bhagwan. Brahma is that Ananta Chetana. And what is that Ananta Chetana? I am that. Aham Brahmasmi. कि वो चेतना है, मैं उसी का अंश हूं, मैं वही हूं. आत्मा सो परमात्मा.
बट टू नो दैट, उसे जानने के मेरे पास बहुत सारे मार्ग हैं। मैं योग के माध्यम से जा सकता हूं, मैं ज्ञान मार्ग से जा सकता हूं, मैं तप के माध्यम से जा सकता हूं, मैं भक्ति के माध्यम से जा सकता हूं। अब मुझे कैसे पता लगे कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सही है? एंड दैट इज द की क्वेश्चन। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिंदू धर्म, सनातन धर्म, that it gives us so many different ways, different paths, with deep analysis of each of those methodologies, a systematic approach to find the balance between who you are, to be at peace within you, and to be at peace and live a prosperous life in the world around you, in the materialistic world, and to reach that supreme conscious state of yours, Brahma. And Hindu Dharma, Sanatan Dharma is the only Dharma that gives you that system. आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों सत्ताओं का, तीनों तरह की चीजों का ज्ञान, उसको जानने का, उनके बीच में सामंजस्य, तालमेल बिठा के जीने का माध्यम हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है. That means the material world where we live in, which is absolutely important, our own inner quest to answer those deep questions: who am I? Why am I here? What is Brahman? What is God? Atato Brahma Jigyasa. And along with those paths, along with those systems and a systematic approach, Hindu Dharma, Sanatan Dharma also gives me the liberty to be that. Soham, I am that. And to realize that Aham Brahmasmi, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं अपनी चेतना का विस्तार कर सकता हूं और मुझ में ही ब्रह्म है. यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो मेरे अंदर है वही सारे ब्रह्मांड में है. जब मैं अपने आप को अंदर से अपने आप को जान लूंगा तो मैं ब्रह्मांड को भी जान लूंगा. और इन्हीं सूत्रों के माध्यम से और इसी तरह के गहन गूढ़ ज्ञान को हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने सूत्रबद्ध करके हमें सनातन परंपरा में बहुत ही विस्तृत साहित्य दिया है, जिसका अनुगमन करके, जिसे जान के, by following those paths, those systems, we can realize ourselves, live and be at peace within ourselves, live prosperously in this world. And I don't have to go through a messiah, I don't have to go through a book, I don't have to live in the fear of the judgment day. And that is what makes Sanatan Dharma, Hindu Dharma, different and deep. And that's why we should understand it with our own philosophy, with our own language, with our own value system. Thank you. If you have any further questions or suggestions, please let us know, and we'll do our best to find the answers if we don't know and share what we know.